ताज़ा तरीन वीडियो से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबा दें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलवीपीडिया में खुश आमदीद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs कंप्यूटर एंड इंटरनेट पार्ट 2। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर? करेक्ट ऑप्शन है सीमोर क्रे। Seymour Cray is universally known as the father of supercomputing. He was an American electrical engineer. Supercomputers were introduced in, correct option है 1960s. Computing power is measured in MIPS. MIPS full form of MIPS is, correct option है million instructions per second. Performance of a supercomputer is measured in, correct option है flops. Flops FLOPS stands for, correct option है floating point operations per second. In computer terminology, DOS stands for, करेक्ट ऑप्शन है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज, लिनक्स एंड यूनिक्स आर पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ यूजर, बी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव, सी सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर, डी ऑल ऑफ दीज. करेक्ट ऑप्शन है all of these. The Macintosh operating system or Mac operating system is an operating system designed by, correct option है Apple. Macintosh Apple ने डेवलप किया है, Windows Microsoft ने डेवलप किया है, जबकि Android ऑपरेटिंग सिस्टम Google ने डेवलप किया है. IBM is a global technology company. What does IBM stand for? Correct option है International Business Machines. Intel is the largest manufacturer of microprocessors. What does the name Intel stand for? Correct option है Integrated Electronics. Hybrid computer is A. Analog computer, B. Digital computer, C. Slow computer, D. Combination of analog and digital computer. Correct option है D. The first virus was created in the 1970s at, correct option है Bell Laboratories. Dr. Solomon and McAfee are popular, करेक्ट ऑप्शन है एंटीवायरस. फॉर प्रिंटिंग ऑफ लार्ज ड्राइंग्स एंड इमेजेस वी यूज, करेक्ट ऑप्शन है प्लॉटर्स. HP is a global computer company. What does HP stands for? Correct option है Hewlett Packard. How many generations of computers have been developed till date? Correct option है 5 generations. Microprocessors were introduced first time in, correct option है 4th generations computer. The third generation of computers introduced the use of dash in computers. Correct option है integrated circuits, ICs. आइए जनरेशन्स को समझते हैं. फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 से 1956 तक थी और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थीं. फिर सेकंड जनरेशन आई 1956 से, इसमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया.
उसके बाद थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आईसी यूज़ हुए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स इस्तेमाल किए गए। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ और ये 1972 से 2010 तक रही। उसके बाद अब फिफ्थ जनरेशन चल रही है जो 2010 से स्टार्ट हुई और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। LED स्टैंड्स फॉर, करेक्ट ऑप्शन है लाइट एमिटिंग डायोड। LCD स्टैंड्स फॉर, करेक्ट ऑप्शन है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। The smallest unit of a digital image or graphic that can be displayed is, correct option है pixel। HD stands for high definition। HD display means a pixel measurement of, correct option है 1280 by 720 pixels। Google Chrome, Mozilla Firefox and Opera are examples of an, correct option है web browser। A web browser is a software application for, correct option है accessing information on the World Wide Web। Which of the following software is used to prepare presentations? Correct option है Microsoft PowerPoint। Which of the following software is used for word processing and document creation? Correct option है Microsoft Word। Dash is a spreadsheet program। Correct option है Microsoft Excel। MS Excel is used to A. Create grids of text, numbers and formulas specifying calculations. B. To organize data and perform financial analysis. C. To store and organize many data sets. D. All of these. Correct option है D. All of these। The size of a monitor's screen is measured by the length of its A. Width, B. Height, C. Width and height, D. Diagonal। Correct option है D. Diagonal। मॉनिटर की स्क्रीन मेजरमेंट उसकी विड्थ या हाइट से नहीं की जाती बल्कि उसका डायगोनल जो होता है एक कार्नर से दूसरे कार्नर तक, उसकी लेंथ को मॉनिटर का साइज कहते हैं। विच की इज यूज्ड टू कैप्चर स्क्रीन ऑफ करंट डेस्कटॉप। करेक्ट ऑप्शन है प्रिंट स्क्रीन। कीबोर्ड शॉर्टकट यूज्ड टू पेस्ट टेक्स्ट और फाइल। करेक्ट ऑप्शन है Control plus V। Control plus A is used to select all। Control plus C is used to copy selected items। Control plus V is used to paste selected items। Home key is used to go to the beginning of the line। End key is used to go to the end of the line। Control plus Home key is used to go to the beginning of the document and Control plus End key is used to go to the end of the document। Control plus N key is used to open a new document। Control plus Y is used to redo the last action। Control plus Z is used to undo the last action and Control plus P key is used to print the document। Wi-Fi stands for, correct option है wireless fidelity। Resolution of a printer is measured in, correct option है DPI। DPI dots per inch refers to the output resolution of a printer, while PPI pixels per inch refers to the input resolution of a photograph or image। Rules for exchanging data between computers are called, करेक्ट ऑप्शन है प्रोटोकॉल्स। इमेज इन कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड अप ऑफ, करेक्ट ऑप्शन है पिक्सल। फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज इन्वेंटेड बाय, करेक्ट ऑप्शन है डगलस एंजेलबर्ट।
Speed of data transmission is measured in, correct option है bits per second. Fortran is the first major computer language. Fortran stands for, correct option है Formula Translator. Fortran was originally developed by a team at IBM in 1957 for scientific calculations. Fortran derived from Formula Translation. Ruby, Perl, Python and Pascal are popular, correct option है computer languages. In internet technology, DNS stands for, correct option है domain name system. Free of cost repair of a software bug available at internet is called, correct option है patch. Which of the following is a correct format of email address? इसमें correct option है B, name@website.com. Receiving data or a file from the internet on your computer is called, correct option है downloading. WhatsApp allows users to send A. text messages, B. images, C. voice messages, D. all of these. Correct option है all of these. Which application is used for video conferencing and distance learning? Correct option है Zoom. Buying and selling products and services online is called, correct option है e-commerce. The process of starting a computer is called, correct option है booting. When we start our computer, then there is an operation which is performed automatically by the computer, which is called booting. Amazon is a global e-commerce giant. It was launched by, correct option है Jeff Bezos. याद रखें, Amazon was started by Jeff Bezos. Apple was founded by Steve Jobs. Google was started by Larry Page. Facebook was started by Mark Zuckerberg. And Microsoft was started by Bill Gates.